Hello everyone, I welcome all of you to my channel Knowledge Center. Myself Om Kumar and today we will discuss our next part of IIT JEE series. हमारा आज का टॉपिक है NCERT सॉल्यूशंस फॉर द टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे पहले जो हमारा पार्ट 7 था उसमें हमने डिस्कस किया था हमारा टॉपिक स्क्रू गेज के बारे में। इसका जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से पार्ट 7 को देख सकते हैं। ओके एवरीवन। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम लोग इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन इन डिटेल्स। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर, दैट इज वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड टू द पावर 3, जिसका साइड का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। That is equal to 10 to the power minus 2 meter to the power 3 is equal to 10 to the power minus 6 meter cube. So we can say 10 to the power minus 6 meter cube. Next है total surface area of a solid cylinder. So the formula is 2 pi r into r plus h, where r is equal to 20 millimeter, h is equal to 100 millimeter. So just put all the values and you will get your answer 15085.72 15085.72 mm square. Next one, a vehicle moving with a speed of 18 kmph covers a distance in meter in 1 second. So first of all we will convert kmph into meter per second. We have to multiply with the value 5 by 18 and we will get our answer 5 meter per second. So distance is equal to क्या होता है, a speed into time. A speed है हमारा 5, time है 1 second, so 5 into 1 is equal to 5 meter. Next question, RD is given 11.3, RD of lead, and we know RD of any object is equal to density of the object divided by density of water. So we have to find out the density in gram per centimeter cube or kilogram per meter cube. So we know that the density of lead will be equal to 11.3 into density of water. So just put the value. Density of water in gram per centimeter cube is equal to 1 gram per centimeter cube, and in kg per meter cube it is 1000. So just multiply the values and you will get your answer. Okay, and the next question here is we have to fill in the blanks by suitable conversion of unit. First of all, we have to convert 1 kilogram meter square per second square into gram centimeter square per second square. So 1 kg is equal to 1000 grams and 1 meter is equal to 100 centimeters. So just put the values. On the place of 1 kg, we can put 1000 grams. On the place of meter, we can put 100 centimeter. And the second will remain as it is. So you will get your answer 10 to the power 7 gram centimeter square per second square. That will be the answer. Now we have to convert 1 meter into light years. So we know 1 light year is equal to 9.46 into 10 to the power 15 meter. So 1 meter is equal to 1 upon 9.46 into 10 to the power 15. That will be the value of meter in light years. We have to convert 3 meter per second square to kilometer per hour square. 1 meter is equal to 1 upon 1000 kilometer and 1 second is equal to 1 upon 3600 hours. So just put the values. On the place of meter, we can put 1 upon 1000 kilometer. On the place of second, we can put 1 upon 3600 hours a square. And our answer will be 3.88 into 10 to the power 4 kilometer per hour square. So quite a simple question. And the question number D, you can see the G value is given 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. We have to convert that into centimeter cube per second square per gram. So you can see here, as we know, 1 Newton is equal to 1 kilogram meter per second square.
1 kg is equal to 10 to the power 3 grams and 1 meter is equal to 10 to the power 2 centimeters. So 6.67 into 10 to the power minus 11, on the place of Newton we can put 1 kilogram meter per second square. On the place of meter it will remains as it is and per kg square will remains as it is. Okay, now 6.67 into 10 to the power minus 11, you can see kilogram and kilogram per kilogram square, so is equal to 1 kilogram per 1 kg, and you can see that meter into meter square is equal to meter cube and the second square will remain same. So 6.67 into 10 to the power minus 11, on the place of kg we can put 10 to the power 3 gram, on the place of meter we can put 10 to the power 2 and second will remain same. So our answer will be 6.67 into 10 to the power minus 8 centimeter cube per second square per gram. So this is how we are converting our values. हमारा अगला क्वेश्चन है, as you can see here. Okay, this is our next question. Let me choose the next different ink here. Yellow will be not yellow, different color like blue. So a calorie is a unit of heat or energy equals to 4.2 joules, and where 1 joule is equal to 1 kilogram meter per second square, right? And suppose we employ a system of unit in which the unit of mass is equal to alpha kg, the unit of length is equal to beta meter, and unit of time is gamma second, so that calorie has a magnitude of 4.2 per alpha per beta square into gamma square in terms of new units. So if you remember the previous videos of my channel, you know how to convert these convert into new units actually. So 1 calorie is equal to 4.2 joules is equal to 4.2 kilogram per meter, 4.2 kilogram meter square per second square. And for the conversion unit, we have discussed that in the previous videos actually, so you can see these videos from my channel. So given unit divided by new unit is equal to m1 upon m2 to the power x, L1 upon L2 to the power y and T1 upon T2 to the power z. जो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है m to the power 1, L to the power 2 and T to the power minus 2, जहाँ पे हमारा m2 हो जाएगा अल्फा के जी, L2 हो जाएगा बीटा और T2 हो जाएगा गामा. x1 का वैल्यू 1 है और y का 2 है और z का -2 है. सो m1 कितना हमारा, m1 है 1 kg, L1 है हमारा 1 मीटर और हमारा T1 है 1 सेकेंड. तो जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज. Calorie upon new unit, so 4.2 into 1 upon alpha to the power 1, 1 upon beta to the power 2 and 1 upon gamma to the power -2. So calorie का हमारा new unit क्या हो जाएगा, 4.2 alpha to the power -1, beta -2 and gamma power 2. Now next question है, explain this statement clearly. To call a dimensional quantity large or small, कि कोई भी हमारा dimensional quantity large या small है, is meaningless without specifying a standard for comparison. So कोई भी dimensional quantity वो बड़ा है या छोटा है, हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि हम उसे किसी से कंपेयर ना कर लें. In view of this, reframe the following statement wherever necessary. पहला है atoms are very small object. इसे हम कंपेयर करते हैं in comparison with bottles. Atoms are very small, क्योंकि bottles में तो बहुत सारे हमारे atoms हो गए. A jet plane moves with greater speed. इसे हम कंपेयर कर सकते हैं ऑटो के स्पीड से. हम लोग कहते थे कि ऑटो के स्पीड से बहुत ज़्यादा है. तो जब तक हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से हम उसे कंपेरिजन नहीं कर लेते, तब तक हम नहीं कह सकते कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है. राइट. नेक्स्ट है इन कंपेरिजन विथ मास ऑफ अ स्टोन द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज एंड सो ऑन. ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, तो आप लोग इसको जितने भी जो सॉल्यूशंस हैं वो आप देख सकते हैं और अपने सॉल्यूशन आप खुद से भी बना सकते हैं, खुद से भी आप नया कंपेरिजन दे सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारा अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन such that the speed of light in vacuum is unity.
What is the distance between the sun and the earth in terms of new unit if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover the distance? First of all, जो distance है between earth and sun हम कैसे पता कर सकते हैं? So distance हो जाएगा हमारा speed into time, और speed किसका? Light का. So speed of light into time. So speed of light कितना दिया हुआ है? 1 unit according to question. So distance क्या हो जाएगा? 1 into ये जो हमारा टाइम है इसे हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे. So 8 into 60 plus 20 is equal to 500 units. That is our answer in the new terms, in the new unit actually. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, as you can see here, which of the following is the most precise device for measuring the length? तो हमारा वो डिवाइस सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा. अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.6 का ए, लीस्ट काउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/20 इज इक्वल टू 0.05. बी का हो जाएगा 1/100 इज इक्वल टू 0.01. और जो सी है, an optical instrument that can measure length to within a wavelength of light. And you know that the optical instrument that can measure length within a wavelength of light, और उसका wavelength कितना होता है? 590 नैनोमीटर के अप्रॉक्स में. सो सबसे ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज मेजरमेंट हमें ऑप्शन सी से मिलेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट through a microscope of magnitude 100. He makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of the microscope is 3.5. What is the estimate on the thickness of hair? तो एक्चुअल थिकनेस क्या हो जाएगा हमारे हेयर का, क्योंकि उसका मैग्निफिकेशन 100 का है, तो एक्चुअल हो जाएगा हमारा 3.5 एंड डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.035 मिलीमीटर. ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज यू कैन सी, आंसर द फॉलोइंग. यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल. हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा थ्रेड होगा, wrap the thread on a uniform, a smooth rod in such a way that the coil thus formed are very close to each other, and measure the length of the thread using a meter scale. So diameter का क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Total length of the thread divided by total number of turns. Now क्वेश्चन नंबर जो बी है, एक स्क्रू गेज है, उसका पिच है 1 mm, उसमें 200 डिवीजन है CSD पर. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions on the circular scale? So yes, see जो least count होता है हमारा screw gauge का, उसका फॉर्मूला होता है pitch divided by number of divisions on the CSD. तो अगर आप नंबर ऑफ डिविजन्स को बढ़ाते हैं तो हमारा जो लीस्ट काउंट होगा वो छोटा होगा, लीस्ट काउंट डिक्रीज करेगा. अगर लीस्ट काउंट डिक्रीज करेगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगा. उसके बाद जो सी पार्ट है, the mean diameter of a thin brass rod is to be measured by vernier caliper. Why is a set of 100 measurement of a diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurement only? आप सभी को पता है, हम लोगों ने जब एरर्स एंड मेजरमेंट टॉपिक्स कवर किया था, तो जितना ज़्यादा आप मेजरमेंट लेंगे उतना ज़्यादा आप एग्जैक्ट डेटा के करीब पहुंच जाते हैं, तो उसमें फिर जो एरर्स है वो काफ़ी कम हो जाते हैं. So the probability of making random errors can be reduced to a larger extent in 100 observation than in the case of 5 observation. Okay. Next है, the photograph of a house occupies an area of 1.75 centimeter square on a 35 mm slide. The slide is projected on a screen and the area of the house on the screen is 1.55 meter square. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? So जो ऑब्जेक्ट का एरिया है वो दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर. इमेज का एरिया कितना है? 1.55. सो एरियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो जस्ट डिवाइड इट एंड यू विल गेट 8857. देन linear magnification is equal to root over ma is equal to root over 8857 is equal to 94.1. That is the value of linear magnification. Next question is here. Then state the number of significant figures in the following.
सो हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लिया था, आप उस वीडियो को भी हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ओके, सो ऑल द एसएफ्स आर गिवन हियर, इसमें हमारा 1 हो गया, 3 एसएफ, 4 एसएफ, 4 एसएफ, 4 एसएफ एंड 4 एसएफ, सो ऑन। ओके, so please don't forget to watch this video regarding the significant figures. Next question है length, breadth and thickness of a rectangular sheet कितना दिया हुआ है 4.234 मीटर, 1.05 एंड 2.01 रिस्पेक्टिवली। हमें निकालना है गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था व्हेन we are discussing the significant figures question in the previous video. So A is equal to क्या हो जाएगा 2 into LB plus BT into TL is equal to 8.721 meter square. That is equal to 8.72 meter square. That means 3 significant figures. So आपको याद होगा कि जो least significant figures होते हैं हमारे values में, हम लोग उसे choose करते हैं। तो least कितने हमारे पास, least हमारे पास 3SF। देन वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा LBT, सो इज इक्वल टू 0.0855। यहां भी हमारे पास 3SF है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ द बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.3 kg। 2 gold piece of mass 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स। तो इसमें आपने 2 मास ऐड किया है। What is the total mass of the box and the difference in the masses of the pieces to correct SF? Then mass of the box कितना है 2.3। फर्स्ट गोल्ड पीस का मास कितना है 0.02015 kg एंड सेकेंड का कितना है 0.02017 kg। सो टोटल मास कितना हो जाएगा 2.340332 इज इक्वल टू 2.3 kg एंड इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 20.17 ग्राम माइनस 20.15 ग्राम इज इक्वल टू 0.02 ग्राम, दैट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स A, B, C एंड D as follows. P is equal to A to the power 3, B to the power 2 divided by root over CD. The percentage errors of measurement in A, B, C and D are 1, 3, 4 and 2% respectively. What is the percentage error in the quantity P if the value P calculated using the above relation turns out to be 3.763? To what value should you round off the result? So यहाँ पर क्वेश्चन में जो P का वैल्यू दिया हुआ है 83B2 to the power डिवाइड बाई रूट ओवर CD. सो डेल P बाई P क्या हो जाएगा, अगर आपको याद होगा हमारा पीछे वाला जितने वीडियो थे रिगार्डिंग द एरर्स एक्चुअली, सो डेल P बाई B क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 डेल A बाई A प्लस 2 डेल B बाई B प्लस 1 बाई 2 डेल C बाई C प्लस डेल D बाई D. So 3 of 1%, 2 of 3%, 1 by 2 of 4% plus 2% is equal to 13%. And P का वैल्यू है 3.763. तो इसको राउंड ऑफ करते हैं P का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.8. सो जो क्वेश्चन 2.14 है हमारा, a book with many printing errors contains 4 different formulas for the displacement y of a particle undergoes a certain periodic motion. यहाँ पर आपको बताना है कि इन सभी में से कौन सा हमारा जो फॉर्मूला है वो गलत है और कौन सा हमारा सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। अगर हम ध्यान से देखें जो A है y का डायमेंशन क्या है m0l1t0 और sin 2πt ये हमारा डायमेंशन लेस है। A का डायमेंशन क्या हो गया m0l1t0, तो LHS और RHS इक्वल है तो हमारा A जो होगा वो करेक्ट होगा। B में y का डायमेंशन सेम m0l1t0, A का डायमेंशन m0l1t0। यहाँ पर जो VT है वो डायमेंशन लेस नहीं है, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो डायमेंशन लेस होने चाहिए, तो ये हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे LHS और RHS इक्वल नहीं है। उसके बाद जो C पार्ट है, जो हमारा AT है, AT का डायमेंशन m0l1t-1, y का डायमेंशन m0l1t0, जो T बाई A है वो भी हमारा डायमेंशन लेस नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया क्योंकि LHS और RHS इक्वल नहीं है। D है y इज इक्वल टू a रूट 2 साइन 2 पाई t बाई टी प्लस कॉस 2 पाई t बाई टी।
सो a√2 उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा m0 l1 t0, 2 पाई t बाई टी एंड 2 पाई t बाई टी, ये हमारा डायमेंशन लेस है. सो LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा D भी सही है, मतलब ये दोनों हमारे गलत हैं. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज यू कैन सी, a famous relation in physics relates moving mass m to the rest mass m naught of a particle in terms of its speed v and speed of light c. This relation first arose as a consequence of a special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर टू दी पावर 1/2. हमें ये गेस करना है कि c को हम लोग कहाँ पे पुट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल m नॉट अपॉन m क्या हो जाएगा √1 माइनस वी स्क्वायर. यहाँ पे जो LHS है हमारा ये डायमेंशन लेस है, तो RHS भी हमारा क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस. और ये कब पॉसिबल है जब हम लोग वी स्क्वायर के नीचे सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तभी ये पॉसिबल है. सो हम लोग कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू दी पावर -1/2. तो सी कहाँ पे पुट होगा इस जगह पे वी स्क्वायर के रेसिप्रोकल में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रम. जहां पर हमारा 1 एंगस्ट्रम है 10 टू द पावर -10 मीटर. द साइज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रम. What is the total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atom? So जो रेडियस है हमारे हाइड्रोजन एटम का वो कितना दिया हुआ है 0.5 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10. वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर -23. And 1 hydrogen mole contains 6.023 into 10 to the power 23 hydrogen atoms. So volume of 1 mole is equal to 6.023 into 10 to the power 23 multiplied by 1.25 into 10 to the power -23 is equal to 3.16 into 10 to the power -7 meter cube. That is the answer. And the next question is, you can see here, 1 mole of an ideal gas at a standard temperature and pressure occupies 22.4 liter, which is the molar volume. What is the ratio of molar volume to the atomic volume of a mole of a hydrogen, and take the size of hydrogen molecule to be about 1 angstrom, and why is this ratio so large? So you can see here, radius है हमारा 0.5 angstrom is equal to 0.5 into 10 to the power -10 मीटर. वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू 0.524 इंटू 10 टू द पावर -30 मीटर क्यूब. 1 hydrogen mole contains 6.023 into 10 to the power 23 hydrogen atoms. Volume of 1 mole is equal to 3.16 into 10 to the power -7. And we have to find the ratio, right? Vm upon Va, जहाँ पे Vm कितना है 22.4 liters is equal to 22.4 into 10 to the power -3. So after dividing, we will get our value 22.4 into 10 to the power -3 divided by 3.16 into 10 to the power -7 is equal to 7.1 into 10 to the power 4. And molar volume is 7.1 into 10 to the power 4 times higher than the atomic volume. So for this reason, the interatomic separation in hydrogen gas is much larger than the size of a hydrogen atom. Next question is, explain this common observation clearly. If you look out of the window of a fast moving train, a nearby trees, houses, etc. seems to move rapidly in a direction opposite to the train's motion. But the distant object, hills, tops, the moon, the stars, etc. seems to be stationary. In fact, since you are aware that you are moving, this distant object seems to move with you. An imaginary line which join the object and the observer's eye is called the line of sight. आप सभी को याद होगा हमारा टॉपिक पैरेलैक्स के बारे में, राइट? सो ये सेम कॉन्सेप्ट है, ये पैरेलैक्स ही है. द इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइंस द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर्स आई इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट. जब ऑब्जर्वर किसी भी नियर ऑब्जेक्ट को देखता है, द मूव फास्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज द लाइन ऑफ साइट चेंजेस कॉन्स्टेंटली. लेकिन जब कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है,
then it seems to be stationary as the line of sight does not changes rapidly. जो हमारा line of sight है बहुत तेजी से change नहीं होता, इस कारण से वो हमें almost stationary दिखता है. Next है हमारा question, the principle of parallax in section 2.3.1 जो कि हमारे बुक का पार्ट है is used in the determination of distance of very distant stars. The baseline AB is the line joining the Earth two locations 6 months apart in its orbit around the Sun. That is, the baseline is about the diameter of the Earth orbit 3 into 10 to the power 11 meter. However, even the nearest stars are so distant that with such a long baseline, they show parallax only of the order of 1 second of arc. So, a parsec is a convenient unit of length to be astronomical scale. It is the distance of the object that will show a parallax of 1 second of arc from opposite ends of the baseline equal to distance from the Earth to the Sun. How much is a parsec in terms of meter? So, Earth का यहाँ पे जो diameter दे रखा है, so dia of Earth orbit दिया हुआ है 3 into 10 to the power 11 meter. Radius of Earth orbit दिया हुआ है 1.5 into 10 to the power 11 meter. थीटा है 1 सेकेंड का, दैट मीन्स 4.847 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 रेडियंस. सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बी अपॉन थीटा जो कि होगा 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 डिवाइड बाय 4.847 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 3.09 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे. How much is this distance in terms of parsec? How much parallax would this star named Alpha Centauri show when viewed from two locations of the Earth 6 months apart in its orbit around the Sun? So आप सभी को याद होगा previous question, 1 light year is equal to कितना होता है हमारा 9.46 into 10 to the power 15 meter of distance. And distance traveled by light in 4.29 light years कितना हो जाएगा 4.29 into 9.46 into 10 to the power 15 is equal to 4.058 into 10 to the power 16 meters. Now, so parsec is also a unit of distance and 1 parsec is equal to 3.08 into 10 to the power 16 meter. Now, distance traveled by light in parsec कितना हो जाएगा, हमें डिवाइड करना होगा इन दोनों को. आंसर हो जाएगा 1.32 parsec. And according to the relation theta is equal to d by d, that is dia of Earth कितना हमारा 3 into 10 to the power 11 meter. So angle made by the star on the Earth orbit theta is equal to 3 into 10 to the power 11 divided by 4.058 into 10 to the power 16 is equal to 7.39 into 10 to the power minus 6 radians. So angle covered in 1 second कितना होता है 4.85 into 10 to the power minus 6 radians. सो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, हमें दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा. 7.39 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 4.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इक्वल टू 1.52 seconds. That will be the angle made by the star on the Earth orbit. Next question is, precise measurement of physical quantities are a need of science. For example, to ascertain the speed of an aircraft, one must have an accurate method to find its position at closely separated instants of time. This was the actual motivation behind the discovery of radar in the World War II. Think of different examples in modern science where precise measurement of length, time, mass, etc. are needed. Also, wherever you can give a quantitative idea of the precision needed. So, अगर आपको यहाँ पे example दिया जाए, precise measurement is essential for the development of science that we all know, and the ultra short laser pulse is used for measurement of time intervals. X-ray spectroscopy is used to find the interatomic separation and to measure the mass of the atoms. Also, the mass of a spectrometer is developed. Okay. Next question is, the sun is a hot plasma, which is a ionized matter, with its inner core at a temperature exceeding 10 to the power 7 kelvins and its outer surface at a temperature or to about 6000 kelvins. So at this high temperature, no substances remains in a solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the sun to be? In the range of densities of solid and liquid of or gases,
check if your guess is correct from the following data. Mass is given of the sun and radius is also given. So volume is equal to 4 by 3 pi r cube is equal to 1.44 into 10 to the power 27, and mass density is equal to mass upon volume, which is 2 into 10 to the power 30 divided by volume, is equal to 1391.465. 4 by 3 pi r cube, that is the volume actually, and you will get your answer. Now the next question is, when the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from the Earth, its angle diameter is measured to be 35.72 seconds of arc. Calculate the dia of Jupiter. It's a simple question. So dia of Jupiter, d is equal to theta into d. Theta is given 35.72 multiplied by 4.874 into 10 to the power minus 6 to be to convert into radians into 824.7 into 10 to the power 9 is equal to 1.435 into 10 to the power 5. That is the dia of the Jupiter. So it's a simple question. Next question is, a man walking briskly in rain with a speed v must slant his umbrella forward, making an angle theta with the vertical. A student derived the following relation between theta and the v. Tan theta is equal to v and checks that the relation has the correct limit as v tends to 0 and theta tends to 0. We are assuming there is no strong wind at that the rain falls vertically for a stationary man. Do you think this relation can be correct? If not, guess the correct relation. So for this question, dimension of LHS should be equal to dimension of RHS. यहाँ पर v is equal to tan theta है, v का डायमेंशन L1 t minus 1 और tan theta वो डायमेंशन लेस है, तो दोनों का डायमेंशन इक्वल नहीं है. सो ये जो रिलेशन है वो गलत है. अगर इसे सही करना है तो हम लोग को v को u से डिवाइड करना होगा ताकि हमारा LHS भी क्या हो जाए, डायमेंशन लेस. सो वी कैन से tan theta is equal to v by u. Next question is, it is claimed that 2 cesium clock, if allowed to run for 100 years, free from any disturbance, may differ by only about 0.02 seconds. What does this imply for the accuracy of the standard cesium clock in measuring a time interval of 1 second? So जो total time है 100 years का, वो कितना हो गया है हमारा 100 into 365 into 24 into 60 into 60. एरर इन 100 ईयर कितना आया है हमारा 0.02 सेकंड का. तो 1 सेकंड में हमारा एरर होगा 0.02 डिवाइड बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू 6.34 into 10 to the power minus 12. दैट इज द एरर इन 1 सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, estimate the average mass density of a sodium atom assuming its size to be about 2.5 angstrom and compare it with the density of sodium in its crystalline phase 970 kg per meter cube. Are the two densities of the same order of magnitude, and if so then why? So जो डाया है सोडियम एटम का वो है 2.5 एंगस्ट्रॉम. सो इसका रेडियस हो जाएगा 1.25 into 10 to the power minus 10 मीटर. वॉल्यूम हो जाएगा 4 by 3 pi r cube is equal to this one, and mass of 1 mole of atom of sodium is 23 gram is equal to 23 into 10 to the power minus 3 kg. Then 1 mole of sodium atom contains this much amount of atom. So the mass of 1 sodium atom is equal to 23 into 10 to the power minus 3 divided by 6.023 into 10 to the power 23 is equal to 3.818 into 10 to the power minus 26 kg. Then atomic mass density is equal to mass upon volume. So mass is here and volume is here. So just divide both of them and you will get your answer 4669.2 kilogram per meter cube. So the next question है, the unit of length convenient on the nuclear scale is the Fermi. 1 Fermi is equal to 10 to the power minus 15 meter. And nuclear size obeys roughly the following empirical formula: R is equal to R naught A to the power 1 by 3. So that the rule implies that the nuclear mass density is nearly constant for different nuclei. Estimate the mass density of the sodium nuclei and compare it with the average mass density of a sodium atom obtained in exercise 2.27. So जो रेडियस है उसका हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है R naught A to the power 1 by 3, जहाँ पे R naught है 1.2 Fermi, that means 1.2 into 10 to the power minus 15 meter. Then न्यूक्लियस को अगर हम स्फेरिकल माने तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 by 3 pi r cube is equal to this much of value. और मास क्या होगा न्यूक्लियस का m into a. Then
मास डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हमारा ma डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 3m बाई 4 पाई r नॉट का पावर 3। सो मास कितना आया था हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में 1.66 into 10 to the power minus 27 kg। So just divide all these values, then you will get an answer 2.29 into 10 to the power 17 kilogram per meter cube। So we can say the nuclear mass density is much larger than the atomic mass density। Next question is here, you can see a laser is a source of very intense monochromatic and unidirectional beam of light। These properties of laser light can be exploited to measure long distances। The distance of moon from the earth has already been determined very precisely using a laser as a source of light। A laser light beamed at the moon takes 2.56 seconds to return after reflection at the moon surface। How much is the radius of the lunar orbit around the earth? So जो टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, टाइम टेकन फॉर द लेजर बीम टू रिटर्न टू अर्थ आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय मून सरफेस इज 2.56 सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 into 10 to the power 8। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। सो टी क्या हो जाएगा 2d अपॉन सी, देन डी इज इक्वल टू 2c अपॉन 2 इज इक्वल टू 3.84 into 10 to the power 8 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, a sonar which is a sonar navigation and ranging system। So a sonar uses ultrasonic wave to detect the locate object under the water। In a submarine equipped with a sonar, the time delay between the generation of a probe wave and the reception of its echo after reflection from an enemy submarine is found to be 77 seconds। What is the distance of the enemy submarine? And a speed of sound in water is given 1450 meter per second। So speed of sound in water is given 1450 meter per second and time between generation and reception of the echo after the reflection is given 77 सेकंड। मतलब टाइम का जाना और फिर लौट कर आना कितना हो गया हमारा 77 सेकंड्स का। सो टाइम फॉर द सेकंड वेव टू रीच द सबमरीन t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38.5। सो डिस्टेंस d क्या हो जाएगा v into t मींस 1450 into 38.5 इज इक्वल टू 55825 मीटर। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the farthest object in our universe discovered by modern astronomers are so distant that light emitted by them takes billions of years to reach them। यहाँ पर एक दिया हुआ है जो डिस्टेंस है किलोमीटर का क्वासर फ्रॉम विच द लाइट टेक्स 3 बिलियन ईयर्स टू रीच अस। सो उसका डिस्टेंस अर्थ से क्या होगा, टाइम दिया हुआ है 3 बिलियन ईयर्स, दैट मींस 3 into 10 to the power 9 ईयर्स इज इक्वल टू 9.46 into 10 to the power 16 सेकंड। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू 2.838 into 10 to the power 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और द लास्ट वन, इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स द डिस्क ऑफ मून ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड द डिस्क ऑफ द सन। फ्रॉम दिस फैक्ट एंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन you can gather from example 2.3 and 2.4 determine the approximate dia of the moon। सो मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है 3.84 into 10 to the power 8। सन और अर्थ का बीच 1.496 into 10 to the power 11। सन का डाया 1.39 into 10 to the power 9 and angular diameter theta is equal to 1920 seconds। If you convert this into radians, you will get this value। And during total solar eclipse, the disk of the moon completely covered the disk of the sun। So the angular dia of both the sun and the moon must be equal। So the angular dia of moon is also 9.31 into 10 to the power minus 3 radians। So dia of moon is equal to theta into s, that is theta multiplied by that distance between moon and the earth, and you will get an answer 35.796 into 10 to the power 5 meter। Okay everyone, so I hope आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। So keep learning, we can meet again, bye for now, because I feel together we can